Today we will discuss the next chapter, reverse charge, and this material has been taken from the GST book by Kanuba Jain and Charu Vinayak, Liani Publishers. जैसे बच्चे हमने लास्ट वीडियोस में हमने काफी बार रिपीट किया है वर्ड रिवर्स चार्ज. सो व्हाट इज रिवर्स चार्ज वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. Reverse charge means normally the supplier of goods or services pay the tax on supply. जैसे हमने अभी तक मैंने आपको यही सिखाया है कि जब सप्लायर है वो जब गुड्स को सप्लाई करता है तो जो सप्लायर है वो आगे गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाता है. बट इन केस ऑफ रिवर्स, रिवर्स मीनिंग मीन्स उल्टा, कि हम अगर इसको हम कहते हैं कि रिवर्स में क्या कि उल्टा हो जाएगा. अब सेलर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे जमा करवाएगा, ठीक है, कौन करवाएगा? नेक्स्ट पर्सन, रिसीवर. So in the case of reverse charge, the receiver becomes liable to pay the tax. ठीक है, तो जो टैक्स लाइबिलिटी उसको हम रिवर्स कर रहे हैं. देखो नीचे इन्होंने दिया है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज. आगे गुड्स सप्लाई कर रहा है, देखो अब गुड्स जा रही हैं रिसीवर को, और आगे जो रिसीवर है वो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहा है. जो आगे टैक्स है वो रिसीवर डिपॉजिट करवा रहा है गवर्नमेंट को. सो जीएसटी पेमेंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. देखो अब इस बुक में क्वेश्चंस की फॉर्म में काफी अच्छा मटेरियल दिया हुआ है. राइट ऑन आईटीसी इन रिवर्स चार्ज. सो व्हाट इज आईटीसी? आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस विल बी अवेल्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ सच गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड और विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस. कि अगर आप जैसे टैक्स पे किया है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे किया गया है, देन जो रेसिपिएंट है ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट. लेकिन अब सप्लायर को नहीं मिलेगा. अब जो रेसिपिएंट है उसने टैक्स पे किया तो देन ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. Then the next is it lawful to collect tax from the recipient of supply on reverse charge basis? Yes, it is lawful. ठीक है, कि अगर मतलब कोई भी टैक्स पे कर सकता है. गवर्नमेंट को टैक्स लेने से है, चाहे वो सप्लायर पे करे, चाहे रेसिपिएंट पे करे, चाहे कोई थर्ड पार्टी जिसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, कनेक्शन है विद द टू पर्सन मीन सप्लायर एंड रिसीवर के साथ, देन ही कैन आल्सो पे द टैक्स. देन नेक्स्ट इज what is the difference between reverse charge under section 9 subsection 3 and under section 9 subsection 4? The government has notified a list of goods and services along with the type of recipient who is liable to pay tax on those supplies covered under reverse charge. तो जो section 9 है वो हमें क्या बताता है? If the goods or services are not listed or recipient is not notified, then reverse charge does not apply. For example, tax in respect of services of advocate availed by a business entity is payable on reverse charge basis if the recipient is a religious trust, which means it is not a business entity, then reverse charge is not applicable. then उस केस में वो कह रहे हैं कि अगर वो बिजनेस एंटिटी नहीं है देन उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं किया जाएगा. देन नेक्स्ट है जो हमने रिपीट किया था अभी, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन. Whereas every inward supply of registered person from an unregistered person, कि अगर जो unregistered person है वो goods को supply कर रहा है, then उस केस में जो registered person है he is liable to pay tax. However, the supplies made by registered suppliers to a registered person are exempted if the aggregate value of such supply does not exceed ₹5,000 in a day per registered person. कि अगर उसकी जो पर रजिस्टर्ड पर्सन जितनी वो सप्लाई कर रहा है उसकी जो अमाउंट है वो 5,000 से बिलो है, देन दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. देन हाउ इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स? हमने पीछे डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स के केस में लगता है रिवर्स चार्ज. देन इफ एन ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई सर्विसेज then reverse charge will be applicable to the e-commerce operator. Then he will be liable to pay GST. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा टीवी पे काफी ऐड आती है. एक ऐप है अर्बन क्लैप. अर्बन क्लैप प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, टीचर, ब्यूटिशियंस, etc. So Urban Clap is liable to pay GST because Urban Clap is the e-commerce operator and collected from customers instead of the registered service providers. So if
Secondly, if the e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, then उस केस में कौन टैक्स पे करेगा? पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. अगर वो भी नहीं है, then उस केस में the operator will appoint a representative who will be held liable to pay GST. Then who are the persons liable to pay tax under reverse charge? First one is जो उन्होंने लिस्ट कवर की है under section 5 subsection 3 of the IGST Act, then covered under section 5 subsection 4 of the IGST Act, then section 5 subsection section 5 and subsection 5 of the IGST Act. और बाकी हमने डिस्कस किया ही है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है देन उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा. देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑपरेटर के केसेस. देन उसके बाद लेंथी क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज रिवर्स चार्ज, डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल. इसमें काफी कुछ पॉइंट रिपीट होने वाले हैं. जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया था जीएसटी है वो सप्लायर पे करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, लेकिन जो हमारा रिवर्स चार्ज में इसमें उल्टा हो जाता है कि जो टैक्स है वो जो रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है. तो उसके लिए जो रिवर्स चार्ज के लिए कुछ सिचुएशंस है जिस केसेस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है. दिस प्रोविजन विल अप्लाई इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. There should be a supply of goods and services. The supply should be in respect of taxable goods and services. Supply must be by an unregistered person. Supply must be to a registered person. And supply must be an intra-state supply. ठीक है, अगर ये पांचों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं देन उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है. देन रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी जैसे हमने अभी डिस्कस किया था सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है. विद द अर्बन ग्लैप हमने जो ऐप थी वो हमने साथ में डिस्कस की थी कि उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो करता है. Then second is if the registered dealer is buying goods and services from an unregistered dealer, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर 5000 से कम की अगर होती है सप्लाई देन उस केस में टैक्स नहीं लगेगा. अगर 5000 से अबव है लाइक जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है कि 7500 की डीलिंग हुई है ना, देन उसको 7500 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. And all other categories of supply will be notified by the central or state government that will fall under the reverse charge. इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए साथ में. कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, देन जो एग्रीकल्चरलिस्ट है वो करता है. देन टैक्स कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन. मीडी रैपर लीव्स है मीन्स अगर इन टाइप की गुड्स की सप्लाई हो रही है देन एग्रीकल्चरलिस्ट है. देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन टैक्स पे करेगा. टोबैको लीव्स है. देन सिल्क यार्न है, सप्लाई ऑफ लॉटरी है, देन उस केस में रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है. देन नेक्स्ट इज लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट है, ये बंदे टैक्स पे करेंगे. The following is the list of services applicable to the tax under reverse charge mechanism, and here the receiver of such services is liable to pay GST on reverse charge. ऊपर हमने डिस्कस किया था वो था लिस्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सर्विसेज एप्लीकेबल टू द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, and here the receiver of such services is liable to pay GST. Services supplied by a person in a non-taxable territory, supplier in non-taxable territory है, then registered taxpayer वो टैक्स पे करेगा. then transport of goods by road है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है. देन टैक्स कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. ऐसे बच्चे काफी लंबी लिस्ट है, यू कैन गो थ्रू द लिस्ट and learn how much points you can easily learn. Then next है कुछ provisions है for reverse charge under GST. First है registration under reverse charge. The central government has exempted such persons from obtaining registration
who are only engaged in making supply of taxable goods or services, right? Then the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services. The next, invoicing rules. Every person who is paying tax on the basis of reverse charge has to mention, जब वो अपना टैक्स फिल करता है देन उस टाइम पे वो टैक्स इनवॉइस में मेंशन करेगा कि he is the recipient of the goods and he is pay tax under reverse charge system. Payment of tax under reverse charge mechanism shall be paid through the electronic cash ledger. Then reverse charge liability cannot be paid through input tax credit. Then exemption from paying tax under GST. In general, a person supplying goods and services up to an aggregate turnover of rupees 40 or 20 lakhs in a financial year is exempted from paying tax, but the taxpayer paying tax on the basis of reverse charge under GST are not eligible for this threshold exemption. Right? Then पहले हमने किया था 40 और 20 lakhs की लिमिट थी, but the taxpayer paying tax on the basis of reverse charge are not eligible for these limit exemptions. Then composition scheme under GST. In general, small taxpayer with the aggregate turnover of rupees 75 lakhs in a financial year are not eligible to pay tax under composition scheme, but the taxpayer paying tax on the basis of reverse charge under GST are not eligible for composition scheme. इसमें क्या है कि हमने small taxpayer with the aggregate turn of rupees 75 lakh in a financial year eligible to pay tax under composition scheme, but the taxpayer paying tax on the basis of reverse charge under GST are not eligible for composition scheme. The next is exemption from reverse charge mechanism. In case of intrastate supply of goods and services, the government has exempted goods and services received by unregistered dealer, provided that the aggregate of such goods, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया था 5000 वाला पॉइंट था इसमें, then the exemption is applied on when goods and services from an unregistered dealer only in case of intrastate supply, and then limit is below the 5000. So this is the difference between forward, जो हमने normal charge और reverse charge को discuss किया था. The direct charge is a mechanism where the supplied of goods and services liable to pay tax. इसमें supplier pay करेगा, उसमें कौन pay करता है, जो recipient है वो pay करता है. Tax liability इसमें supplier of goods के ऊपर आती है, इसमें receiver के ऊपर आती है. Registration is required once a supplier meets the threshold limits, and all the people required to pay tax under reverse charge and have to register themselves for the GST. उसके ऊपर कोई exemptions apply नहीं होती. Supplier can only be a registered supplier, and an unregistered supplier cannot collect taxes. Then a supplier can also be a registered supplier in case of supply of notified goods. Then recipient can be a registered or unregistered person, but in case of reverse charge, it must be a registered person.